Oh, good evening. How are you? Hi, good evening, Pinaki, Rajesh. Are you all set for the session? Yeah, Cool. pardon? Okay. See, today, okay, before we move into the session, I just want to know where are you as last four sessions are concerned? Pardon? The last four sessions that we have covered, where are you right now? Like what we covered so far. We covered the first day we covered knowing to getting. Okay. Before that, we covered the power of reframing. Then we covered internal representation. Then Internal yesterday representation. I we attended talked that. about introduction to submodalities. Fourth session, which was fourth? The first one was reframing, simple reframing. Yeah, The second one was from knowing to getting. yes. The That third I, one was internal representation. yes. The fourth one, which we did yesterday, is introduction to submodalities. Oh, yesterday I missed that session. Okay, okay. Recordings have been provided anyway. Okay, okay. I will. Actually, I forgot that recording also. Hmm. I was busy. And today we will be talking about introduction to timelines. Okay. Okay, I don't know how many of you actually use timelines after NLP practitioner course. And timelines is actually very vital. You know, what timelines helps us is to figure out uh, how we can delegate people about certain activities. When you want to delegate people certain things, how we can do that. And before doing that, we need to calibrate that whether this person is capable of doing it or not. Okay, so it's like rapport building, then calibration, and calibration. When you're doing calibration, this timeline makes a huge difference. And do you remember what timeline was all about? Any idea? टाइमलाइन मीन्स मतलब आप टाइमलाइन डिसाइड करो भी मुझे इस मंथ के इस डेट पर तक ये काम करना है No, not that, not that. Yeah, Rajeshwar, you remember what timeline was? Timeline we covered two things. One was through time, one was in time. व्हाट Through time and in time. Do you remember that? थ्रू टाइम Through time and in time. नो आई एम नॉट अवेयर Okay, good. It's good that you forgot about it. So that's I can take a class. थ्रू टाइम एंड इन टाइम Through THROUGH, through time ओके and in time. Okay, let's do this if you're ready. Yeah, Rajeshwari, are you ready? Okay, Rajeshwari is in a bus. All right, fair enough. So, okay, Rekha, we can do it together. See, you actually close your eyes. If you can come on a camera, that will be awesome. ओके Hmm. Super. So, what you need to do is very simple. Just close your eyes and whatever I ask you to do, just think about it. That's it. और कुछ करना नहीं. Close your eyes and just think an incident which happened 1 week ago or which happened yesterday, for example. You can just imagine it wherever it is, okay? And then imagine an event which happened 1 day ago. Then imagine an event which happened let's say 3 days ago. 15 Okay, days 3 days ago. Then imagine an event which happened say 7 days ago. Then imagine an event which happened say 15 days ago. Then imagine an event which happened say 1 month ago.
Okay. Now, if I ask you to show me where do you see them, where do you see them? In which side do you see all these dots of events? Towards your front, towards your back, towards your side, where do you see them? Where these events are? Something which happened 1 hour ago, followed by 1 day ago, followed by 3 days ago, followed by a week ago, followed by 15 days ago, followed by a month ago. वो dots आपको कहाँ दिख रहे हैं? Where do you see those dots? Can you show me? Keep your eyes closed. Just show me with your hand where you can see them. Those events, where they are. I can't hear you, Rekha. Okay, ठीक है. So you got mute. It's okay. So you can show with your hand. Where do you see them? In front of you, behind you, towards your side, towards your top, towards your bottom. Where do you see these events? Okay. Now think about an event which happened, say, 3 months ago. Then think about an event which happened, say, 6 months ago. They're all falling on a line, by the way. They're all falling on a line. So this line is going far away from it. As we are thinking some old event, it is going far away from it, but in a specific direction. An event which occurred, say, 6 months ago, an event which occurred 1 year ago, some event which occurred 2 years ago, and then some event which occurred, say, 5 years ago. You connect those lines, okay? Just connect those dots with a line where you see them. So they will all falling on this one line. The one which happened 1 hour ago is closest to you, and one which happened 5 years ago is far away from you, but they're all on the same line. Okay. Now imagine an event which is going to happen 1 hour from now. अभी हम फ्यूचर की तरफ थोड़ा चलते हैं. Okay. Imagine something which is going to happen tomorrow. Tomorrow, say, you will be maybe taking your classes, so you will be in that class. Where do you see that point? Somewhere. Okay. So what we are doing, we are on the same line. Now we are moving backwards, the other side of that line. Okay. Think about an event which is going to happen, say, 3 days from now. Think of a future which is 7 days from now. Think of an event which is going to happen, say, 15 days from now. कल्पना की याद से 15 दिन आगे. इवेंट नहीं भी याद आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं. आप बस इतना आइडेंटिफाई कर लो कि वो पॉइंट आपको कहाँ पे दिख रहा है. Then think about an event 1 month from now. Think about 6 months from now. Where do you see that dot on that line? Think about 6 months down the line. Think about 1 year down the line. Think about 5 years down the line. अब ये सब आपका एक ही लाइन में है. अभी आप जहां पे हो वहां से कुछ आगे है, कुछ पीछे है, कुछ साइड में है. So now where do you see this line? ये जो पूरा लाइन आपने बनाया जहां पे सारे इवेंट्स है, is that line passing through you or is that line somewhere outside you? Where do you see this line now? Where all these events are falling,
Where do you see this line? Towards your left, towards your right, towards your front, towards your back, or it is actually passing through you, that line? Maybe passing from left to right, right to left, or maybe top to bottom, front to back. ये line आप कहाँ देख रही हो? Where do you see that line? So you can open your eyes now and come back to present. Okay. अब बताओ आपको वो line कहाँ दिख रहा है? I can't hear you, Rekha. Rekha, unmute and talk. ओके, पहले तो मुझे वो थोड़ा इवेंट वाले में थोड़ा ये चैलेंजिंग लगा, कभी कोई इवेंट कभी कोई इवेंट ऐसा कभी कोई क्लासरूम का इवेंट कभी कोई घर का, ऐसा मतलब ऐसा नहीं था कि एक ही चीज को लेकर के कोई इवेंट आ रहे थे माइंड में, ऐसा नहीं था। But तो these are all dots. So now you can see that line, right? उस हम्म लाइन में कुछ आपके फ्यूचर में है और कुछ आपके बैक पास्ट में है. हम्म Where do you see that line now? Is that line passing through you, inside you, or is it somewhere outside? वो लाइन आपको कहाँ दिख रहा है? इज लाइक सामने दिख रही है लाइन। सामने. So the line is outside you. It's not inside you, right? Okay. So if the line is outside you, you are a through time person. Or if a line is inside you, if this line is passing inside you, then you are an in time person. क्या डिफरेंस है इनमें? Okay. So if this line, this timeline that you discovered, that you just figured out, if this timeline is outside you, if it is running outside you, if it is somewhere outside you, if it is not running inside you, it is not running through you. मान के चलो एक रॉड है, वो रॉड आपको बाहर दिख रहा है, आपका अंदर से मूव करते हुए दिख रहा है. ओके. So if you see that line outside you, then you are a through time person. And if that line is inside you, you are an in time person. Okay. और थ्रू टाइम पर्सन और इन टाइम पर्सन का अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. जो थ्रू टाइम पर्सन होते हैं, दे नॉर्मली टेक लॉट ऑफ टाइम टू टेक अ डिसीजन. तो बहुत सोच विचार करके सिद्धांत देते हैं. एंड दैट जल्दबाजी में डिसीजन लेना ही नहीं चाहते. दे अवॉइड टेकिंग डिसीजन अनलेस दे आर फोर्स्ड टू डू इट. दे डोंट डू इट. They do it in a planned way. And even छोटी छोटी activities like even brushing your teeth or going to washroom, you do it in a planned way. You take time. And जो इन टाइम पर्सन होते हैं, दे वांट टू गेट थिंग्स डन राइट. उनको अगर कुछ अभी लिखना है तो अभी लिख लेंगे, कुछ करना है तो अभी कर लेंगे. दे डोंट वेट फॉर इट. उनके लिए वेटिंग टाइम कुछ नॉर्मली होता ही नहीं. दे जस्ट वांट टू गेट द जॉब डन राइट. किसी को फोन करना है तो अभी कर लेंगे. ऐसा नहीं कि चलो शाम को करते हैं या 2 बजे करते हैं. अभी करके देख रहे तो अभी अवेलेबल है कि नहीं है. वो अगर बोलते हैं शाम को 6 बजे कॉल करने का, तो देन आई विल गो एंड टॉक टू दैट पर्सन एट 6 o'clock. अगर मुझे बात करनी है मैं तो अभी बात करूँ. यही पता करने के लिए मैं अभी बात करूंगा ना. कभी कभी मुझे लगता है कि मैं थ्रू टाइम हूँ, कभी लगता है कि नहीं नहीं टाइम फोन कर लेना चाहिए काइंड। हाँ. सो फंडामेंटली यू आर अ थ्रू टाइम पर्सन. फंडामेंटली. अब क्या होता है कि देयर आर सर्टेन सिचुएशन वेयर यू नीड टू टेक क्विक डिसीजंस एंड यू फाइंड इट डिफिकल्ट टू डू दैट. So there you can change that mode. So now before we change that mode, let us get to the basics of it. The basics is that अगर आप किसी से कोई काम तुरंत करवाना चाहते हैं, you find out that person who is a in time person. और अगर आप किसी से कोई काम आराम से करवाना चाहते हैं तो find out that person through time person. So through time people, they do things in a planned way. उनको आप कुछ कितना भी प्रेशर डालो वो करेंगे. और इन टाइम पर्सन उनको जितना आराम से करने के लिए बोले वो करेगा नहीं. वो जल्दी जल्दी करेगा. उसका काम ही है कि इसे खत्म करो. आजकल बच्चे ऐसे होते हैं इन टाइम वाले। नहीं, सारे नहीं है. इट ऑल डिपेंड्स. देयर इज अ फंडामेंटल ट्रेट. कुछ उनका फंडामेंटल होता ही है. अदरवाइज अब उसके पास टाइम कम है तो बेचारा क्या करेगा. वो उसी टाइम के अंदर वो कुछ करना होता है. बट
the way he loves to live, the kind of activities that he wants to do, or the sometimes the decisions that he wants to take, उसके पीछे डिपेंड करते हैं what is his timeline. Is he a through time person or is he an in time person? So before you delegate any activity to anybody, or for example, if you ask somebody to do something और आप देख रहे हो कि वो इंटेंशनली डिले कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा है, ये भी हो सकता है इसका मतलब ये नहीं कि वो लेजी है, वो बहुत सोच समझ के सिद्धांत दे रहा है. सो ही इज अ थ्रू टाइम पर्सन. और आप किसी से कोई काम आराम से करवाना चाहते हैं, जैसे आपके बच्चे जो हैं वो हड़बड़ी करते हैं, इफ यू थिंक दैट दे आर एन इन टाइम पर्सन, यू नीड टू हैंडल देम दैट अकॉर्डिंग. जहां पे उनको थ्रू टाइम मोड में लेके आना है, उसको बिठा के कुछ करवाना है, यू हैव टू मेक श्योर दैट द एनवायरनमेंट इज लाइक दैट, जहां पे प्रैक्टिकली बैठेगा. लेकिन ये इतना आसान नहीं, उसका एक प्रोसेस होता है. यू कैन ब्रिंग दैट पर्सन फ्रॉम इन टाइम टू थ्रू टाइम मोड, एंड व्हेन यू ब्रिंग दैट पर्सन टू थ्रू टाइम मोड, get the job done or take the decision, and then you go back to it in time mode again. But primarily वो बंदा बिल्कुल वैसा ही होता है. The best way to do it is कि आप, for example, जैसे आप लोग classes लेते हैं, तो you sit with the children and you get this exercise done. You take a notebook, take a note. So कौन सा बच्चा मेरा in time है, कौन सा बच्चा मेरा through time है. You can do the same thing with members in your family, with your friend circle, with your relatives. Figure out what kind of person they are. आप उनके साथ अलग अलग से interact करो and follow the same process. Just ask them the same thing. That think on your timeline, a day to day, आज से एक दिन पहले, आज से एक दिन, ये कहाँ पे fit हो रहा है, just that day कहाँ पे fit हो रहा है. For example, not even the event, just take the day. ये परसों कहाँ पे fit हो रहा है, एक हफ्ता पीछे कहाँ पे fit हो रहा है, कहाँ पे fit हो रहा है. And then you ask for the futures, and you ask them to draw a line to connect them, and where that line is. If that line is going through them, that means they are an in time person. तो उनसे आप वही काम एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो तुरंत करना चाहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ. जैसे जब भी आप कोई ऑनलाइन सेशन लेते हैं या कोई बच्चों के साथ क्लासेस ले रहे हो, काफी सारे बच्चे वहां पे हैं, आपने उनको क्या बोला, कोई एक बोला कि चलो आप जस्ट फिगर आउट 10 थिंग्स और मे बी 3 थिंग्स और मे 5 थिंग्स, कैन जस्ट थिंक ऑफ 5 थिंग्स, राइट डाउन. जो लोग जल्दी जल्दी लिखते हैं, दे आर इन टाइम पर्सन. वो लोग धीरे धीरे लिखते हैं, दे आर थ्रू टाइम पर्सन. So this is one way to identify whether a person, whether a child, whether a student is through time person or in time person. उनको आप जो भी होमवर्क देंगे वो वैसे ही करेगा. जो थ्रू टाइम पर्सन वो आराम आराम से करेगा, घर जाएगा, सोचेगा, फिर किताब खोलेगा, फिर नोटबुक खोलेगा, फिर करेगा अपना होमवर्क. और जो थ्रू टाइम, जो इन टाइम पर्सन है, वो घर जाएगा, फटाफट करेगा. अगर उसको होमवर्क करना है तो होमवर्क जाके ही कर लेगा. ही विल नॉट वेट. हड़बड़ी करेगा, गलती करेगा, लेकिन उसका इंटेंशन ये है कि इसको खत्म करो, फिनिश इट ऑफ. जो भी इसमें गलती होगी वो हम कल देखेंगे, टीचर के पास जाके देखेंगे, कि हम जब रिव्यू करेंगे तब देखेंगे. सेम विद पीपल. आपके घर पे जितने लोग आपके साथ काम करते हैं, यू विल फाइंड पीपल कुछ जो बहुत स्लो है, आराम आराम से करते हैं, कुछ लोग बहुत फटाफट फटाफट करते हैं. So in time and through time is a very good tool to calibrate a person. Calibrate करना, और ये बहुत जरूरी होता है. When particularly when you are working in a team, you need to figure out that what kind of people are there in your team. मान के चलिए आपके टीम में ऐसे कुछ लोग हैं जो इन टाइम पर्सन है, और उनको आप कुछ डेलीगेट कर रहे हो, which needs to be done in a planned way, और आप देख रहे हो कि उससे काम नहीं हो रहा है, नेचुरल है. तो वो प्लान वे में करने वाला है ही नहीं. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू लुक एट द लीडर ऑफ अ टीम, जो लीडर होते हैं, they are all through time people because they have to plan it. और जो वर्कर्स होते हैं, they are all in time people. So those who are soldiers, imagine जो soldiers होते हैं, what kind of people they should be. वो लोग कैसे होना चाहिए, in time या through time? In time. In time. उसको फटाक फटाक डिसीजन लेना.
लेकिन जो उसका जो लीडर है, द पर्सन हु इज हाँ, प्लानिंग कि आप कहाँ से एक्शन लोगे, कैसे एक्शन लोगे, वो कैसा होना चाहिए। स्ट्रैटेजी मेकिंग में। सो आप देखिएगा जो लेबर क्लास के लोग हैं ना, पीपल हु आर डेली वेज अर्नर्स, मोस्ट ऑफ देम आर इन टाइम पीपल। और जो सैलरीड क्लास होता है नॉर्मली, जो डेस्क जॉब करते हैं, दे आर ऑल थ्रू टाइम पीपल, मोस्टली जो डेस्क जॉब होते हैं। तो अगर आपको किसी को अपॉइंट करना जो आपके लिए मार्केटिंग का काम करेगा, तो कैसा बंदा होना चाहिए? टू टाइम। थ्रू टाइम नहीं, इन टाइम। इन टाइम कैसे? उसको मार्केट में निकलना है और डेटा उठा के लेके आना है। वो प्लान नहीं कर सकता बैठे बैठे। प्लान करके जाए कि मुझे इस तरह से ये काम एग्जैक्टली, करना है, इस तरह से ये काम, एग्जैक्टली। तो स्ट्रैटेजी बना के करे। जो सेल्समैन होंगे उनका क्या, वो कैसे होना चाहिए, थ्रू टाइम और इन टाइम? सेल्समैन सेल्स में इन टाइम हो सकते हैं। इन टाइम, उनको भाई कैसे वो सेल क्लोज करना है। हम्म। दे विल लुक फॉर एवरी अपॉर्चुनिटी टू क्लोज द सेल। हम्म। मार्केटिंग का बंदा फिर भी थ्रू टाइम हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट दैट यू आर सेलिंग। और जो सेल का बंदा है, इट दैट पर्सन हैज टू बी इन टाइम। वो हर तरीके से कोशिश करेगा आपको बेचने का। जैसे आप सब्जी खरीदने जाते हो, आप देखेंगे कुछ लोग हैं जो सब्जी बेचते हैं, फल बेचते हैं, जो लोग थ्रू टाइम है वो बहुत टाइम लेते हैं। उनसे आप सामान खरीदो ना खरीदो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आपको प्रेशर भी नहीं डालेंगे। लेकिन जो इन टाइम पर्सन होता है, वो आपको, आप खरीदने जा रहे हो सेब, वो आपको साथ में मैंगो भी बेच देगा। बिकॉज ही इज लुकिंग एट द रेवेन्यू। हर कस्टमर से वो एक्सपेक्ट करेगा, ये अगर मेरे से 100 रुपए का प्रोडक्ट लेने आया तो इसको मैं कम से कम 150 रुपए पूछूं। आपको बोलेगा मैडम ये नया आया है, अभी आया है, फ्रेश आया है। वो हर वक्त बातें करता रहता है। अब जो आराम आराम से करता है वो आराम आराम से ही करता है। आप उससे वो बोले, और उसको आपको पूछना पड़ेगा, हाँ भाई सेब क्या रेट है, हाँ भाई आम क्या रेट है। यू मे इवन नीड टू आस्क हिम, ये कौन सा आम है। लेकिन जो सेल्समैन है जो इन टाइम है, वो आपको बोल देगा ये लंगड़ा है या दसरी है या चौसा है, फटाक से बोलेगा आपके पूछने से पहले ही। आप पूछो ना आप पूछो फिर भी बोलेगा। सो सेल्स पर्सन हैज टू बी ऑलवेज एन इन टाइम पर्सन। रिसेप्शनिस्ट इन टाइम या थ्रू टाइम? डिपेंड्स। इन टाइम भी हो सकती है, टू टाइम भी। रिसेप्शनिस्ट शुड ऑलवेज बी इन टाइम। उसको तुरंत डिसीजन लेना होता है हम्म। कि कॉल आया तो मैं इसको अभी क्या करूं। रिसेप्शनिस्ट शुड बी इन टाइम, एंड बिकॉज शी विल बी हैंडलिंग सो मेनी थिंग्स। वो सिर्फ कॉल नहीं हैंडल करें, शी इज हैंडलिंग वॉक इन कस्टमर, शी इज हैंडलिंग अदर क्वेरीज। कुछ भी हो रहा है, आप आपने उसको छोटा सा काम बोल देता है, अकाउंटेंट को भी उसको अगर हैंडल करना था, अकाउंटेंट को भी वो हैंडल कर रहे हैं। कोई पानी मान के, जब वहाँ पे वाटर स्टेशन है जहाँ पे कोई पानी सप्लाई करता है, तो वो जब आता है तो उसके साथ भी कोऑर्डिनेट वही करती है। सो अ रिसेप्शनिस्ट हैज टू बी इन टाइम पर्सन। इन टाइम पर्सन रिसेप्शनिस्ट क्या था, वो घड़ी देखती है कि आई एम गेटिंग इन द ऑफिस एट 10 o'clock। बाय द टाइम इट इज 5 o'clock, वो घड़ी देखना शुरू करती है कि 5:36 हुआ, मैं निकल गई। पूरी तैयारी करती है निकलने की। By quarter to 6, if the time is to leave the office at 6 o'clock, by quarter to 6 you will notice that she is preparing for leaving the office. से बैग तैयार है, वॉशरूम का काम है तो वॉशरूम कर लेगी, सब करके एकदम ऑन डॉट शी विल लीव एट 6। गार्ड्स जो होते हैं, दो तरह के गार्ड्स होते हैं। कुछ गार्ड्स हैं जो थ्रू टाइम गार्ड्स होते हैं, वो धीरे धीरे उनका, उनको गार्ड का भी काम कर रहे हैं लेकिन साथ में वो ऑफिस के दूसरे काम भी कर रहा है, लोगों से बातें भी कर रहा वैसे तो इन टाइम ही होते हैं ना गार्ड्स। है। इन टाइम गार्ड्स वो होते हैं जिनके पास गन होते हैं। हम्म। They have to be in time anyway because they have to take decision just like that.
लेकिन कोई गार्ड को आपने ऑफिस में रखा है जो आपका रजिस्ट्री भी एंट्री कर रहा है, जो छोटा छोटा इधर उधर का काम भी कर रहा है, दैट बट दीज पीपल आर मोस्टली थ्रू टाइम पर्सन। इन टाइम पर्सन से ये एक्सपेक्ट आप कर ही नहीं सकते। इन टाइम पर्सन चुपचाप बैठ ही नहीं सकता, या तो खड़ा रहेगा या तो लोगों से बात करता रहेगा। ये थ्रू टाइम पर्सन जो होता है वो चुपचाप खड़ा रहेगा, बैठा रहेगा। गार्ड से ऐसे बहुत गार्ड है जिनका ड्यूटी होता है बैठ के ड्यूटी करना। इन दैट केस दे हैव टू बी थ्रू टाइम पर्सन। इन टाइम पर्सन को बिठा के नहीं रख सकते, थोड़ी देर बैठेगा, दो चार लोगों से बात करेगा, ऑप्शन ढूंढेगा कितना जल्दी मैं इस काम को खत्म करके कोई और काम करूँ। He might be doing a duty of a guard just to look for a new job. है ना? तो अगर आपने इन टाइम बंदे को ऐसा गार्ड का ड्यूटी दिया कि उसके पास एक चेयर है, एक गार्ड रूम है, सब कुछ बना हुआ है, वो वहां पे ज्यादा दिन टिकेगा नहीं। इसलिए वहां पे आपको थ्रू टाइम गार्ड चाहिए, थ्रू टाइम लोग चाहिए। बैंकर्स पीपल, जो लोग काउंटर में बैठते हैं, बैंक के काउंटर में बैठते हैं, कैश एक्सचेंज कर रहे हैं, इन इन टाइम टाइम और थ्रू टाइम, एब्सोल्युटली उनको तो दे बहुत हैव ही टू ज्यादा, बी इन टाइम। और इन टाइम लोगों की प्रेजेंस ऑफ माइंड भी एकदम शार्प होनी चाहिए। जो मैनेजर होता है इन टाइम और थ्रू टाइम, मैनेजर थ्रू टाइम हो हैव टू। तो this is a very powerful tool. You can actually use this tool to identify people and interact with them accordingly. उनको अगर कुछ डेलीगेट करना तो आप वैसे डेलीगेट कर सकते हो, उनसे कुछ काम लेना है तो आप ले सकती। सकते हो, उनसे कुछ बातें करना है, कुछ डिस्कशन करना है, आप कर सकते हो। किसी मान के चलो आपके पास बहुत टाइम है, यू जस्ट वांट टू गॉसिप, तो कैसे व्यक्ति को आपको ढूंढ के निकालना पड़ेगा, इन टाइम या थ्रू टाइम? थ्रू टाइम। थ्रू टाइम। बट व्हेन यू आर इन अ हरी, यू जस्ट वांट टू गेट सर्टेन थिंग्स डन, आपको इन किसी के टाइम। साथ कुछ बैठ के इन टाइम। तो प्लानिंग करना है तो थ्रू टाइम। जो प्लानर्स होते हैं दे आर थ्रू टाइम पीपल। So primary all planners are through time people और executioners are in time people. जो लोग execute करते हैं they are in time people. बस का ड्राइवर he can be a through time person. उसको संभाल के गाड़ी चलाना होता है। इन कंडक्टर जो होता है that guy has to be an in time person. उसको तुरंत डिसीजन लेना पड़ता है। वो टिकट भी ले रहा है, लोगों को उठा भी रहा है, उतार भी रहा है, ध्यान भी रख रहा है किसने टिकट दिया किसने नहीं दिया, आगे लेडीज है कि नहीं, लेडीज सीट खाली है कि नहीं, कोई बदमाशी कर रहा है कि नहीं बस के अंदर, सारा कुछ उसको देखना पड़ता है। लाइक जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, if they are good planners then they can have a good business, but if they are not a good planner, if they're in time person, they need somebody to take care of the planning part। वो तो हमेशा दौड़ रहा है, भाग रहा है। So with this new idea, with this new thoughts, what do you see for yourself, Rekha? क्या possible है? बिल्कुल, मैं बोलूँगी नॉट जस्ट इन प्रोफेशनल लाइफ, इन पर्सनल लाइफ आल्सो वी कैन use this tool to calibrate, to like our we set our behavior according to the person, according to my children life, they are in time or through time, can like in my house, like mother-in-law, she is a kind of like through time है, तो मुझे कैसे behave करना, that will be useful to me. I can judge the pattern of thinking also. Absolutely, That is absolutely. helpful to me. Okay, so that's it for tonight. Okay. Half an hour done. Thank you. All right, good night. Good night. Good night. Okay then. And tomorrow there will be off. Tomorrow at 11 o'clock we have a session, but we can drop that session and continue these weekly sessions itself. Weekly session मेरे ख्याल से अच्छा रहेगा। Okay. हमें कोई वीकेंड का सेशन करने की क्या जरूरत नहीं। वीकडेज में बिफोर नून हो सकता है? मेरे को बिफोर नून थोड़ा कंफर्टेबल टाइम है, अगर पॉसिबल है। We need to work it with Rajeshwari.
अगर ओके। अभी आप दोनों ही हो तो हाँ, whatever is convenient for both of you, I will follow that time. मेरे लिए अगर कोई चैलेंज अगर राजेश्वरी को बिफोर नून वाला कन्वीनियंट है तो वो वाला करेंगे, हाँ नहीं तो फिर जैसे चल रहा है। हाँ, नहीं तो we'll work out a convenient time for all of both of you. See, I can रेगुलर take out my में time. मेरे को 7 बजे वाला थोड़ा सा मेरे लिए चैलेंज आ रहा है, ठीक है। चैलेंजिंग है। हाँ जी। तो एक बार हम आज आप एक बार राजेश से बात कर लीजिए। हाँ, और मैं तो चाहती हूँ मैं थोड़ा लाइव सेशन ही लाइव लगा सेशन ही करना अच्छा रहेगा, बिकॉज ये जब के, सेशन हाँ, हमने किया। तो मेरा मिस हो जाता नहीं तो ना हाँ ये 7 बजे वाला इसीलिए। ठीक है, सो विल वर्क दैट आउट। हाँ, ठीक आई है। हैव नो आई हैव नो चैलेंज, लाइक जो भी आप लोगों के लिए दोनों के लिए कन्वीनियंट होगा, आई एम आई कैन टेक वेरी आउट माय मच टाइम कन्वीनियंट विद बिफोर नून, बिफोर नो, ठीक है। आफ्टर 11 to 1, between 11 to 1 आई एम वेरी मच चेक कर कन्वीनियंट। लेंगे, राजेश्वरी का भी स्कूल रहती है ना, सो वी कैन हाँ, फाइंड आउट स्कूल व्हाट रहता इज है ना, कन्वीनियंट फॉर। तो फिर 9 बजे के बाद कर लेंगे, फिर अगर पॉसिबल हुआ तो 9 बजे के बाद भी चलो, फिर भी कैसे भी करके। चलेगा, आई एम ओपन टू इट, मेरे पास कोई चैलेंज 7 नहीं। वाला मुझे थोड़ा चैलेंजिंग है। ठीक है, 9 to 10, 9:30 ठीक है मेरे लिए। ठीक है, ओके, ठीक। थैंक यू, गुड ओके, नाइट, बाय या बाय। बाय 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 बाय, गुड नाइट।